Right from the time of the Holy Prophet, peace be upon him, Islam has advocated for the protection of human rights. It says that every individual, male or female, possesses a soul. Therefore, every individual is entitled to respect, dignity, and fair treatment. In the Holy Quran, Surah 80, Abasa, tells the story of a blind, poor, yet pious man. He was unattended in a gathering vis-a-vis other persons who were wealthy and socially rich. God did not like this unfair treatment. The lesson we can draw from the story is that every individual deserves respect, dignity, and decent treatment. The entire concept of human rights hinges on the treatment of all human beings as equals, with the same rights and privileges that other members of society enjoy. Why is a human being so privileged? Perhaps this can be deduced from the famous 10th century fable of the Brethren of Purity, or Raza al-Ikhwan al-Safa. The fable features a trial in which legatees of the animal caste sue humans for unjust treatment. Man's physical and intellectual abilities, his religious and metaphysical aspirations, his moral conduct, his rights and obligations vis-a-vis the rest of creation are all called into question throughout the narrative until the last part when man salvages the situation by adducing the immortality of his soul, whereby he has an edge over other creatures. Allah has honored mankind with special rights. The violation of human rights mostly occurs in a society which is factionalized with all kinds of divisions. The illiterate, the defenseless, and the financially weak mostly suffer at the hands of the powerful. Education is almost non-existent in such societies, therefore, the powerless cannot protect their rights, nor are they able to respond in the event of violation of their rights. Though it is the responsibility of all tiers of government to ensure the proper enforcement of laws related to human rights, they often ignore their responsibility. Educating society is the sure key to empowering people and protecting their rights within the framework of the law. Since primitive times, human history is replete with events mentioning the violation of human rights on the basis of religion, caste, creed, color, etc. Many human societies had struggled to acquire their rights as provided by God. When the tradition of slavery prevailed, prisoners and other powerless people used to be traded. However, in the 7th century, with the arrival of Islam in Arabia, this practice was disapproved and Muslims were encouraged to free their captives to gain Allah's blessings. Presently, we live in an age that is striking in its unprecedented technological sophistication. But the prejudices and inequities that have plagued humanity in the past continue to exist and are responsible for untold suffering. Slavery in a new shape has come into existence. It has rightly been said by 18th century philosopher Rousseau that man is born free but is everywhere in chains. This echoes the plight of modern society. The poor and other helpless and vulnerable people are treated cruelly and their rights are usurped, thus we still hear painful stories of servitude, forced and compulsory labor, human trafficking, etc. The violation of human rights seems rampant. Those who possess power, material or physical, often suppress and oppress the powerless. However, the teachings of Islam are clear in this respect. We are servants of none but Allah, and the soul He put in our bodies before our birth is worthy of respect. What is the soul? It is an essence, immaterial, invisible and core element through which we live and move in the world. The body is material, limited in time, space and subject to the vicissitudes of life. The body is born and one day it will die, whereas the soul is eternal. According to the Quran, the soul is from the command of Allah, and of that knowledge, humankind has been given only a little, Surah 17, Ayat 85. Though human beings have been given a modicum of soul-related knowledge, they are considered to be the crown of creation. They have an edge over other creation. They are empowered to use the forces of nature in a positive manner. Allah has ennobled and honored mankind with special rights as stated in the Quran. Verily we have honored the children of Adam. We carry them on the land and the sea, and have made provision of good things for them and have preferred them above many of those whom we have created with a marked preferment. Surah 17, Ayat 70. Unfortunately, many people are unaware of their position as human beings, which Islam has bestowed.
They live, act and treat themselves and others like animals, or even less than animals. They have to be educated so that they may know their position along with rights in society. The writer is an educationist with an interest in religion. Published in Dawn, February 3, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही इस्लाम ने इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की वकालत की है। इसमें कहा गया है कि हर शख्स चाहे वो मर्द हो या औरत एक रूह रखता है, लिहाजा हर फर्द एहतराम, वकार और मुंसिफाना सलूक का हकदार है। कुरान करीम की सूरा अब्बासे में एक अंधे, गरीब और परहेजगार इंसान की कहानी बयान की गई है। वो एक इज्तिमा में दीगर अफराद के मुकाबले में लावारिस थे जो अमीर और समाजी तौर पर अमीर थे। खुदा को यह गैर मुंसिफाना सलूक पसंद नहीं आया। इस कहानी से हम जो सबक हासिल कर सकते हैं वो ये है कि हर फर्द इज्जत, वकार और मुहज़्ज़ब सलूक का मुस्तहिक है। इंसानी हुकूक का पूरा तसव्वुर इस बात पर मुनहसर है कि तमाम इंसानों के साथ मसावी सलूक किया जाए और उन्हें वही हुकूक और मुराद हासिल हों जो मुआशरे के दीगर अफराद को हासिल है। एक इंसान को इतना एजाज़ क्यों हासिल है? शायद इसका अंदाज़ा 10वीं सदी ईस्वी के मशहूर अफसाने पाकीज़गी के भाइयों हरसाल इख्वान अल-सफ़ा से लगाया जा सकता है। अफसाने में एक आजमाइश पेश की गई है जिसमें जानवरों की वजह से काम करने वाले अफराद इंसानों के साथ गैर मुंसिफाना सलूक के लिए मुकदमा करते हैं। इंसान की जिस्मानी और फिक्री सलाहियतें, इसकी मजहबी और माबाद अल्तबियाती ख्वाहिशात, इसके अखलाकी तर्ज अमल, बाकी मखलूक के मुकाबले में इसके हुकूक और जिम्मेदारियों पर आखिरी हिस्से तक पूरी कहानी में सवालात उठाए जाते हैं जब इंसान अपनी रूह की अबदियत को शामिल करके सूरत हाल को बचाता है जिससे उसे दूसरी मखलूकात पर बरतरी हासिल है। अल्लाह ताला ने इंसान को खास हुकूक से नवाजा है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ज्यादातर एक ऐसे मुआशरे में होती है जो हर किस्म की तकसीम के साथ गिरोहबंदी करता है। नाखानदा, बेसहारा और माली तौर पर कमजोर लोग ज्यादातर ताकतवर ओहे के हाथों मुश्किलात का शिकार होते हैं। ऐसे मुआशरों में तालीम का कोई वजूद ही नहीं है, लिहाजा बे-इख्तियार लोग अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते और न ही वो अपने हुकूक की खिलाफ वर्जी की सूरत में जवाब देने के काबिल होते हैं। अगरचे इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ क़वानीन के मुनासिब नफाज को यकीनी बनाना हुकूमत की तमाम सतहों की जिम्मेदारी है, लेकिन वो अक्सर अपनी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज करते हैं। मुआशरे को तालीम देना लोगों को बाइख्तियार बनाने और कानून के दायरे में उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीनी किलीद है। कदीम ज़माने से ही इंसानी तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है जिनमें मजहब, ज़ात-पात, नस्ल, रंग वगैरह की बुनियाद पर इंसानी हुकूक की पामाली का जिक्र किया गया। बहुत से इंसानी मुआशरों ने खुदा के फराहम करदा अपने हुकूक के हुसूल के लिए जिदोजहद की थी। जब गुलामी की रवायत गालिब थी तो कैदियों और दीगर बे-इख्तियार लोगों का कारोबार किया जाता था। ताहम 7वीं सदी ईस्वी में अरब में इस्लाम की आमद के साथ ही इस अमल को मुस्तरद कर दिया गया और मुसलमानों की हौसला अफजाई की गई कि वो अल्लाह की नेमतों को हासिल करने के लिए अपने कैदियों को आज़ाद करें। इस वक्त हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जो अपनी बेमिसाल तकनीकी नफासत में हैरत अंगेज है, लेकिन वो तासुबात और अदम मसावात जिन्होंने माजी में इंसानियत को अपनी लपेट में लिया है वो अब भी मौजूद हैं और नाकाबिल बयान मसाइब के जिम्मेदार हैं। गुलामी एक नई शक्ल में वजूद में आई है। 18वीं सदी के फ़लसफ़ी रूसों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इंसान आज़ाद पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। ये जदीद मुआशरे की हालतजार की अक्कासी करता है। गरीब और दीगर बेसहारा और कमज़ोर लोगों के साथ ज़ालिमाना सलूक किया जाता है और उनके हुकूक गस्ब किए जाते हैं। इस तरह हम अब भी गुलामी, जबरी और लाजमी मजदूरी, इंसानी स्मगलिंग वगैरह की दर्दनाक कहानियां सुनते हैं। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बड़े पैमाने पर नजर आती हैं। जिनके पास मादी या मादी ताकत होती है वो अक्सर बे-इख्तियार लोगों को दबाते और उन पर जुल्म करते हैं। ताहम इस हवाले से इस्लाम की तालीमात वाज़ेह हैं। हम अल्लाह के सिवा किसी के बंदे नहीं हैं
और जो जान उसने हमारी पैदाइश से पहले हमारे जिस्म ओहे में डाली वो काबिल एहतराम है। रूह क्या है? ये एक जौहर, गैर मादी, पोशीदा और बुनियादी उनसर है जिसके जरिए हम दुनिया में रहते हैं और हरकत करते हैं। जिस्म मादी है, वक्त जगह में महदूद है और जिंदगी के उतार चढ़ाव के ताबे है। जिस्म पैदा होता है और एक दिन वो मर जाएगा, जबकि रूह अबदी है। कुरान के मुताबिक रूह अल्लाह के हुक्म से है और इस इल्म में से इंसान को सिर्फ थोड़ा सा दिया गया है। सूरत 17 आयत 85। अगरचे इंसानों को रूह से मुताल्लिक इल्म का एक टुकड़ा दिया गया है, लेकिन उन्हें तख्लीक का ताज समझा जाता है। उन्हें दूसरी तख्लीकात पर बरतरी हासिल है। वो फितरत की क़ुव्वतों को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए बाइख्तियार हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ख़ास हुकूक से नवाजा है, जैसा कि कुरान मजीद में फरमाया गया है, बेशक हमने बनी आदम को इज्जत बख्शी है। हम उन्हें ज़मीन और समंदर में ले जाते हैं और उनके लिए अच्छी चीज़ों का रिस्क दिया और उन्हें उनमें से बहुत से लोगों पर फजीलत दी जिनको हमने नुमाया फजीलत के साथ पैदा किया है। सूरत 17 आयत 70। बदकिस्मती से बहुत से लोग बहैसियत इंसान अपने मकाम से नावाकिफ हैं जो इस्लाम ने अता किया है। वो जिंदा रहते हैं, अमल करते हैं और अपने आप को और दूसरों को जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं, जानवरों से भी कम। उन्हें तालीम याफ्ता होना चाहिए ताकि वो मुआशरे में हुकूक के साथ साथ अपने मकाम को भी जान सके। मजमून निगार एक माहिर तालीम है जो मजहब में दिलचस्पी रखते हैं। अखज़ शुदा बतारीख 3 फरवरी 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.